Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Lipakshi. Let's take a look at some stories of this week's episode. Residents in illegally occupied POK sit on indefinite hunger strike against government's apathy towards education. Exiled leaders apprise British MPs of grim human rights situation in illegally occupied GB and POK, demand support. High-tech polyhouses in Srinagar preparing hybrid vegetable seedlings to increase vegetable production in the valley. Ummeed scheme empowering women in the far-flung areas of Rajouri. And later in our section of Incredible India, we'll take you to get soaked in the festivities of Goa Carnival. Scores of people in the Rawalakot area of illegally occupied POK are sitting on an indefinite hunger strike against the government's apathetic attitude towards education in the region. They are primarily demanding the completion of construction work of a Chota Gala campus of Poonch University. The residents say the campus construction was supposed to complete in 2011, but thanks to oppressive and discriminatory regime that works at the direction of Islamabad, the work never got completed. We have a report. Scores of demonstrators consisting primarily of residents of Chota Gala in Pakistan-occupied Kashmir, workers and former employees of Poonch University are on an indefinite strike against the government. They shouted slogans against the local as well as the federal government for being apathetic towards the higher education of the students of illegally occupied territory. The Chota Gala campus of the Poonch University, whose construction began some 13 years ago, was supposed to complete in 2011. However, a corrupt administration coupled with the retiring intent of not getting things done in time for people of POK hasn't let the construction of the university move even an inch in past many years. हम इंतजामिया वालों को ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारा पूरा मन एहतजाज जो है वो अरसा दराज से हमारे साथ ज्यादती हो रही है। इसके मौजू पर हमारे साथ ये कोई फैसला करे। अगर यहाँ पर कोई आदमी हमारे भाई, हमारे बेटे और हमारे यहाँ 7 आदमी है, कोई आदमी भी अगर नुकसान हो गया तो इंतजामिया जिम्मेदार है और इसका खुलासा भुगतने के लिए वो तैयार हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी इशू पे हम यहाँ पे कदम भूख हड़ताल कदमपोश बैठे हुए हैं और हमारे साथ हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं, माएँ भी बैठी हुई हैं। इससे बड़ी सितम शरीफी की और क्या बात होगी कि 13 साल पहले शुरू किया मनसूबा अभी तक बन ना सका। तो हम आपके सामने कसम में बैठे हुए हैं। हमारी जो बॉडीज़ हैं वो भी क्लेम नहीं कर सकते हमारे घर वाले कि वो ले जाएं। हम जहीं मरेंगे, यहीं पर रहेंगे और अपने हक के लिए आखिर दम तक लड़ेंगे। Protests have happened in past too, but the governments have turned a blind eye to the demands of the people. The demonstrators this time have, however, said that they will not give up until their demands of resumption of construction are met. तकरीबन साल से मुसलसल यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ की अदम तामीर के सिलसिला में मुतहदा माज पूंछ जो है वो मैदान के अंदर मौजूद है और हमारा मुतालबा एक निकाती है और वो ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ की तामीर जो 2017 से लेकर आज तक बंद है, इसको फुल शुरू किया जाए। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ फोरम के ऊपर बात की, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, 3 रोज़ा हमने धरना दिया और जलसे दूसरे के असर निकाले। उसके बावजूद हमारी आवाज़ को किसी भी फोरम के ऊपर नहीं सुना गया। आखिरी एहतियात के तौर पर हमारे पास जमहूरी रवायात को जिंदा रखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ की तामीर के लिए एक ही रास्ता बाकी था और वो था कि हम अपनी जान दे दें और वो फैसला बिलाखिर हमने कर लिया और आज रावलाकोट के इस कचहरी के दरमियान हम मौजूद हैं और मुतहदा माज पूंछ तमाम सियासी जमातें, ट्रेड यूनियन, तमाम महाज इसमें मौजूद हैं और इंशाअल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ की तामीर तक हमारा ये तादम मर्ग जो भूख हड़ताल है ये जारी और सारी रहेगी। For years, the prime objective of Pakistan has been to deny education to students of Pakistan-occupied Kashmir. What Prime Minister Imran Khan and the PR machinery of Pakistan have been continuously trying to push is not just farcical but a complete lie. Instead of facilitating their education,
students in Pakistan-occupied Kashmir are being pushed into a situation where they are forced to abandon education. Pakistan may propagate any lies, but the fact of the day is that a little over just 2% of the population of the region is graduate, and there is no glimmer of hope even in future as the government continues to launch one or the other form of a crackdown on higher education. And ever since Pakistan illegally occupied a part of the then princely state of Jammu and Kashmir, it has been committing numerous atrocities on the people of this region. Their lands have been snatched, their natural resources plundered, and adding more to their woes, even their political leaders work in cahoots with Islamabad. Highlighting all these issues, POK activists recently urged the UK to use its influence and ask Pakistan to give Kashmiris their basic human and fundamental rights. A delegation led by the exiled leader from Pakistan-occupied Kashmir, Sardar Shaukat Ali Kashmiri, recently briefed the MPs from the British Labour Party, Richard Burgon and Fabian Hamilton, along with other community leaders at Leeds in the United Kingdom. The delegation raised concerns for the restoration of peace in the illegally occupied Gilgit-Baltistan and POK and the protection of rights of the citizens. Sardar Shaukat Ali Kashmiri urged the leaders to ask Pakistan to repeal all the draconian laws that suppress the voices of Kashmiris and restrict their freedom of movement. I met with some of the MPs, councillors and community leaders, and I explained and asked the MPs especially to put pressure on Pakistan that Pakistan should repeal all draconian laws which actually suppressed our voices, and we have no freedom of movement, no freedom of expressions. And even the diaspora Pakistani and Kashmiri, they are also received threats from the Pakistani authorities, and it is known to all. That's why I asked them that those people who lived in Pakistan or Pakistani peripheries, you can imagine their human rights. Even after being aware of this fact that both its government and judiciary have no locus standi on the part of Jammu and Kashmir illegally occupied by it, Pakistan has never shied away from exploiting its resources and people. Even after calling it a disputed territory at international platforms, Pakistan has been consistently brute in ensuring that the region remains under its boots. Since 1984, when it abolished the state subject rule in the region to enable a massive demographic shift, it has left no stone unturned to snatch almost every civil right a society possesses inherently. Activists from POK like Sardar Shaukat Ali Kashmiri have again and again highlighted these issues at international forums, and this time too they put forth their problems before the British MPs. All the MPs take interest and promise with me that they will address the concern of the Kashmiri peoples and convey the message to the concerned governments to respect the freedom of movement and freedom of expressions, and also to save the life and liberty of the state peoples. Pakistan has always posed itself standing for the rights of Kashmiri people, but in reality, the barbaric occupier is itself denying the people of its illegally occupied territories their basic rights and resources. It has not only exploited the people and the resources of this region, but has also pushed it to a state of complete oblivion by framing unjust laws and policies.
And next we move on to Jammu and Kashmir, where the preparation of hybrid vegetable seedlings in high-tech poly houses is going on in full swing. As the Agriculture Department is determined to give a major boost to vegetable cultivation in the Kashmir Valley, it has resorted to the production of high-quality seedlings. Have a look. To enhance the quality and increase the productivity of vegetables produced in the valley, the hybrid vegetable seedlings are being prepared in large quantities at Lal Mandi in Srinagar. A hybrid is created by crossing two different varieties of the same plant. Crossing involves taking the pollen from the male flower of one plant and transferring it to the female flower parts of a different plant. High-tech poly houses have been brought to use by the Agriculture Department Kashmir to prepare these hybrid vegetable seedlings. They will help to upscale the cropping intensity of vegetable seedlings under controlled conditions. यहाँ हम सीडलिंग प्रोडक्शन करते हैं, सीडलिंग बनाते हैं और आजकल यहाँ ये सारा हो रहा है अंडर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। पॉली हाउसेस का रोल सर्दियों के बावजूद बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इससे हम वो टेम्परेचर दे पा रहे हैं सीड को जो चाहिए जिससे वो जर्मिनेट हो, जिससे हमारा टाइम भी बच जाए। जो हमारे आने वाले एक महीना अभी है, इस महीने में हमारी सैंपलिंग्स तैयार हो जाएंगी। इससे बहुत फ़ायदा मिलता है हमारे ग्रोवर्स को, हमारा टाइम बचता है, उनका भी टाइम बचता है इनमें, क्योंकि हम ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जब सीडलिंग बनाते हैं तो उनको अर्ली टाइम ये सीडलिंग यहाँ से प्रोवाइड होती है, उससे उनका भी टाइम बचता है। The quality sapling material will then be provided to growers, especially kitchen garden lovers in Kashmir, that will help to give boost to their income. These poly houses prove to be a boon, especially during winters when the valley receives high snowfall and hinders the growth of vegetable production. इनमें ये फ़ायदा होता है कि हम विंटर सीजन में भी सीडलिंग करते हैं तैयार, और आपने सर देखा है कि छोटे छोटे सीडलिंग्स हो गए हैं तैयार थोड़ा, और हमने सर हार्ड बेड्स भी बनाए हैं। इसका पर्पज़ होता है कि विंटर में हम कैसे सर तैयार करते हैं वो जो हम विंटर में नहीं करते हैं। इसमें हम ऑर्गेनिक मटेरियल डालते हैं और इससे क्या होता है कि टेम्परेचर मेंटेन होता है, और हम पॉलीग्रेन्स भी लगाते हैं। और इसमें सर, और यहाँ पर सर पहले एक्चुअली क्या होता था कि कम होता था, अब जब एडवांसमेंट हो गई सर, और इससे हमारा बहुत सा जो फार्मर्स है उनको बहुत सी सर होती ज़रूरत भी पड़ती है इसकी। At the conventional poly houses, there is a lack of basic facilities and proper irrigation system that leads to the formation of weaker saplings, which further produce low-quality vegetables with lesser yield. But this is not the case in a high-tech poly house, as it is made of a polycarbonate double-layer transparent sheet and is installed with digital water showers, heaters and clocks. It also has a special green colored net to create an internal environment to protect the saplings from excess heat or cold. With such controlled environment, these poly houses are able to grow 3 times more hybrid vegetable saplings, due to which farmers will be able to avail them the entire year, even during the off-season. ये अभी जो हार्श विंटर है इसमें तो बहुत मुश्किल होता है वैसे, बट वही हमारे पास जो टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है, हम उसकी मदद से कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे कंज्यूमर्स को जो भी सैपलिंग्स है वो प्रोवाइड कर सके। विद द हेल्प ऑफ दीज हाईटेक जो हम यहाँ पे पॉली हाउसेज, हमारे कन्वेंशनल पॉली हाउसेज हैं, तो हम उनकी हेल्प से जो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आई है हम उसमें अपनी सैपलिंग्स तैयार कर रहे हैं, मतलब छोटे छोटे जो, ताकि जो हमारे ग्रोवर्स होंगे, कंज्यूमर्स होंगे, लेने आएंगे
तो हम उनको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकें। उसके लिए जो हमारी पूरा यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, अभी भी लगे मतलब चल रहा है काम हमारा। यहाँ पर हमारा हॉट बेड भी बने रहेगा, उनको एक डिस्प्ले रहेगा यहाँ पे, ताकि वो यहाँ पे देख सकें कि किस टाइप के सैपलिंग अंदर लगे हैं, तो उनकी क्वालिटी क्या है वो यहीं पे देख सकेंगे सर। Vegetable production has a good potential for employment generation in Kashmir, and it can touch new heights with the use of hybrid seedlings and modern technologies. The rural women of Jammu and Kashmir are on the path to financial independence. All thanks to Umeed scheme under Jammu and Kashmir Rural Livelihood Mission that not just aims to make women self-reliant by investing in their livelihoods, but also to unleash their potential and empower them. Under the same, women even in the remotest areas of Rajouri have opened up their own businesses and are leading an independent life. Women even in the most far-flung areas of Jammu and Kashmir's Rajouri district are emerging as entrepreneurs. Ranging from garments to cosmetics to agriculture, they are slaying in almost every business. And all this has become possible due to the centrally sponsored Umeed scheme, which is being run in the Union Territory under J&K Rural Livelihood Mission. Under this scheme, several women have been able to derive loans from the banks to set up their own businesses. Launched in 2013, at present around 2,500 self-help groups are operating under Umeed scheme in Rajouri, where more than 19,000 women have found their means of livelihood. जो बेरोजगार औरतें घरों में बैठी हुई थी, रोजगार नहीं था, उन औरतों ने हमारी स्कीम के साथ जुड़कर लोन लिया और हमारे एक्टिविटी शुरू की है। जैसे सर हमारे यहाँ पे एक ये शॉप थी समझौता देवी लड़की के नाम से, तो उनके पास कोई पैसा नहीं था रोजगार चलाने के लिए, तो सर उन्होंने ग्रुप के साथ जुड़कर ये पैसा लिया और पैसा 4.5 लाख रुपया लेकर ये दुकान स्टार्ट की है। उसके बाद सर हमारे यहाँ पे कुरेना शॉप हैं, कुछ क्लोथ शॉप हैं, उसके बाद सर हमारी पार्लर शॉप है, यहाँ पे कटिंग टेलरिंग का भी कुछ लड़कियों ने काम शुरू किया। सर मैंने खुद अपने ग्रुप में एक कटिंग टेलरिंग का यूनिट तैयार किया है और उसमें 10 लड़कियां काम कर रही हैं। जब से हम इस उम्मीद ग्रुप से सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हैं, हमें बहुत फायदा हो रहा है। हमारे साथ और भी बहुत सारी लड़कियां जुड़ रही हैं, स्कीम में आ रही हैं आए दिन, और मतलब इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। जैसे जैसे और भी स्कीम्स आ रही हैं, जैसे कृषि सखी का हो गया, पशु सखी का हो गया। इससे लड़कियां जो बहनें हैं इंटरेस्ट लोन लेती हैं और अपना जो जरूरत अनुसार जो भी उन्होंने काम करना वो करते हैं, चाहे उनका कृषि का हो या कोई पशु का हो, कुछ उन्होंने एनिमल्स वगैरह को कुछ लेना हो तो वो भी यहाँ से लेके वो खरीद सकती हैं। मतलब ये In Rajouri's Budhal block alone, there are 780 functional self-help groups established under Umeed scheme, in which more than 5,600 women members are working. These SHGs are also providing different types of skill development and job-oriented training to women in their area, which is further making them self-reliant. Women in Budhal are happy, as now with everything available in their own area, they don't have to travel to the main city for shopping or training purposes. यहाँ पे लड़कियों को इतनी परेशानी होती थी रजौरी जाने में, कभी टाइम मिलता था लड़कियों को रजौरी जाने का, कभी नहीं भी मिलता था। तो हमारा ये बहुत बैकवर्ड एरिया था, यहाँ पे बहुत कम मतलब एक्टिविटी ऐसी कोई भी नहीं थी, लेकिन जब से इसके साथ जुड़े हम स्कीम के साथ, यहाँ पे बहुत एक्टिविटी है। जैसे क्लोथ शॉप यहाँ पे बहुत सारी है, पार्लर शॉप है, कटिंग टेलरिंग का काम यहाँ पे उसका काम भी रखा हुआ है, लड़कियों को सिलाई का काम सिखाने का भी। नहीं तो पहले लड़कियां बेरोजगार घर बैठी रहती थी, तो किसी किस्म की रोजगार उनको नहीं थी। तो उनके पास अगर कोई स्कीम अगर वो शुरू करना चाहती थी तो उनके पास पैसे ही नहीं होते थे। तो जब से इस NRLM के साथ जुड़ी हुई हैं
तब से किसी भी लड़की को कोई परेशानी नहीं हो रही। Ummeed scheme is mandated to reach out to all the poor families, link them to sustainable livelihood opportunities and nurture them till they come out of poverty and enjoy a decent quality of life. It is a great initiative by the central government that is not just helping the rural women in Jammu and Kashmir to become more skilled, but is also instilling confidence in them. हमारी स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है जिसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। हमारे यहाँ यूटी में इसको उम्मीद के नाम से जाना जाता है। उम्मीद जैसे नाम ही है ऐसे ही लोगों के लिए यहाँ के जो लेडीज हैं और जो फीमेल्स हैं उनके लिए एक उम्मीद की किरण लेके आई है। जो घर में लड़कियां बगैर किसी काम काज के बैठी हुई थी, कुछ एम्प्लॉयमेंट के कोई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं थी, साधन नहीं था, तो ये एक हमारा जो उम्मीद है ये एक उम्मीद इनके लिए बन के आई है जिसमें ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो अपनी वो भी जनरेट कर रही हैं, साथ में डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स वगैरह वो भी हासिल कर रही हैं और एम्पावर हो रही हैं। ये बैंकिंग सर्विसेज खुद जाके बैंक में अपनी जो जितने भी बैंकिंग सर्विसेज खुद कर रही हैं और बाकी वाली जितने भी गवर्नमेंट की हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम से उसका बेनिफिट ले रही हैं। यानी कि जो हमारा ये स्कीम है इसका पूरे तरीके से लाभ ले रही है इस एरिया में जो फार फ्लंग एरिया है। Ummeed, as the name suggests, is proving a ray of hope for a number of rural women in Jammu and Kashmir to achieve their dreams and progress towards a happier, successful and independent life. And next we move on to our section of Incredible India, where today we will take you to explore Goa or Viva Carnival, which is one of the most anticipated festivals of the state. The 4-day extravaganza provides a wonderful opportunity for revelers to soak in fun and frolic. Take a look. A perfect blend of tradition and modernity, a 4-day-long Viva Carnival is one of the most awaited festivals of Goa. It is declared open by a lucky local who gets to play the role of King Momo and led the parade through the streets of Panji amid cheering crowd. The Carnival festivities open. King Momo, or the King of the Carnival, is the prime character of this extravaganza. The word Momo is derived from the Greek god Momus, the god of satire. Tourists from different parts of the country as well as outside visit Goa to be a part of the fiesta and have a glimpse of the state's vibrant culture. The first time we have visited to this kind of carnival, so it's a new experience for us, so really feeling good, and along with kids, so they are also enjoying and everything. The carnival is not started yet, so I'm just excited and I want to dance and sing and have fun with my friends. So thanks for organizing that, and let's see the weekend. Different float parades accompanied by live bands and dances are the highlight of the carnival. Innovative minds are on display as they show the tendency to caricature even the most serious matters beautifully. This year, floats on issues like environmental conservation and coronavirus pandemic figured prominently in the traditional carnival. A series of placards with messages on same topics were also on display to create awareness among the masses. This carnival is special because it's an eco-friendly carnival. We are taking care to minimize the use of plastics
and we're having a zero waste management when there'll be no disposal of any, no litter, any waste. Animal issues also drew the limelight at the parade. While one life-size rhino float sent a strong social message to save the rhinoceros, another float with a mechanized bull urged people to stop animal cruelty. Thousands of people were seen standing along the roadside to experience the unique celebrations. It is amazing. It's a great experience that you could not think that you could have in India, but it's here. First time ever. Amazing. You're forgetting where you're coming from. You're forgetting that there was a pandemic that was happening. You can breathe now and you're really living. Focused on feasting and merrymaking, Viva Carnival started in 18th century and is organized just before the beginning of Lent, a 40-day period of fasting and prayer. The carnival is exclusive and unique to the state and was introduced by the Portuguese who ruled over Goa for over 500 years. Though it fell into obscurity in between, but it was again resurrected as a minor street celebration in 1965. That's all we have for you in this week's episode. Until we see you next week, it's goodbye from the entire production team.